student, this is the question GATE 2007, 2 mark, question number 51 and 52. This is a common data question, 4 mark. That contain 2 question. You know what is the concept of common data. Common data is given asking about the 1 or 2 question, 2 or 3 question depends. Like in architecture is asking about the 3 questions sometimes. A process has been allocated 3 page frame. Assume that none of the page of the process are available in the memory. Means initially all 3 frame are empty and process made the following page reference string, that is 121374563 and what is the question? First question is, if optimal page replacement policy is used, then how many page fault will occur for the above string? Getting my point? And what about the optimal? In optimal says replace the page that will not be used for longest period of time. That will not be used for longest period of times. That is the meaning of optimal, and just reverse of the LRU. And second is asking, if LRU page replacement policy is used compared to optimal, then for the above string how many more page fault occur in LRU compared to optimal? Means in the question number 1 you have to apply the optimal page replacement algorithm, in question number 2 you apply the LRU page replacement algorithm, but in question number 2 you have to calculate how many more page fault as compared to optimal. Clear? So we'll discuss one by one. First we are talking about the optimal, and this is the reference string 121374563. You can solve here also 121374563. Initially 1 पे page fault, 2 पे page fault, 3 पे पेज फॉल्ट इधर. नाउ 7 पे पेज फॉल्ट है. 1 2 3 में कौन लास्ट में आ रहा है? पहले आपको 3 मिल रहा है, फिर आपको 1 मिल रहा है. मीन्स कौन सा नहीं मिल रहा है? विच वन इज लास्ट? 2 इज लास्ट. सो यू रिप्लेस 2 by 7. गेटिंग माय पॉइंट? देन 4 इज नॉट प्रेजेंट. देन यू सी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 1 7 3 में 3 1 7 is replaced by 4. Then 5 you will see 1 4 3 3 1 is present, 4 is replaced. Then 6 5 is replaced and 3 1 is present. 2 4 6 and 7 पेज फॉल्ट इन ऑप्टिमल. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल? कि जब भी आपका पेज फॉल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पेज फॉल्ट आ रहा है, तो आप इससे आगे फ्यूचर डायरेक्शन में देखेंगे कि इन तीनों में से लास्ट पहली बार, इन तीनों में से पहली बार सबसे लास्ट में कौन आ रहा है. यानी आपको पहले कौन मिला? 3 मिला, फिर 1 मिला, मीन्स 2 नहीं मिला, या मिला भी तो इसके बाद में मिल रहा है, तो 2 रिप्लेस करा. सेम प्रोसेस अप्लाई, सो एंड. और जब भी ऑप्टिमल के बाद LRU में बात करेंगे तो विल चेक इन रिवर्स डायरेक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर इन ऑप्टिमल पेज फॉल्ट इज 7. और अब मैं LRU के बारे में बात करूं आपसे. 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1. First page fault 1, second 1 2, and this one is third 1 2 3. Whenever the 7 पे page fault आया, what we have to do? We'll see reverse direction which is least recently. First 3 come, then 1, then 2. So we replace with 2. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आप ये नहीं बोलेंगे कि सर 1 लास्ट में आ रहा है. नो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट इन फर्स्ट अकरेंस, पहली बार सबसे लास्ट में. तो पहले 3 मिला, देन 1, देन 2. 2 की जगह अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? 7 से. 4 पे पेज फॉल्ट आया, किसको हटाएंगे? 1 7 3 में 7 3 1, तो 1 इज रिप्लेस बाई 4. 5 पे पेज फॉल्ट आया, किसको हटाएंगे? 4 7 3 में 3 इज रिप्लेस बाई 5. 6 पे पेज फॉल्ट आया, किसको उठाएंगे? 4 7 5 में 5 4 7 इज रिप्लेस बाई 6. 3 पे पेज फॉल्ट आया, 4 6 5 में 6 5 देन 4
4 is replaced by 3, 1 पे पेज फॉल्ट आया, what will happen, 3, 5, 4, 4 is replaced by 1. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So number of page fault is 9. You can calculate number of page fault is 9, but is asking in question number 2 how many more page fault. So in optimal you are getting 7, in LRU you are getting 9. So 2 more page fault occur in LRU. Clear? Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.